चैनल। सो इन टुडेज वीडियो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। सो गाइस अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। नाउ गाइस फर्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मिनीकोनी ब्रांड का प्राइमर। सो ये मैंने मीशो से परचेज किया था और ये मेरे फेस के जितने भी ओपन पोर्स है उन्हें ब्लर आउट कर देगा। नाउ गाइज इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स का एस ऑफ फेस फाउंडेशन। इसमें मेरी शेड है 07 वनीला लैटे। इसको कंसीलर आई एम यूजिंग लॉरियल इनफॉलिबल फाउंडेशन एंड इसमें मेरी शेड है 102 जो कि मेरी स्किन टोन से लाइटर है। दैट्स वाई मैं इसे एज अ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। तो आपके पास भी कोई फाउंडेशन है जिसकी शेड लाइटर है तो आप उसे अपने फेस पे एज अ कंसीलर यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। नाउ फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एडीएस लूज पाउडर। इससे बेसिकली आपको अपने फेस को बेक करना है ताकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, बिल्कुल भी केकी टाइप में ना रहे। तो अच्छे से पूरे फेस को आपको सेट करना है। नाउ अब आपको वेट करना है 30 सेकेंड्स तक के लिए ताकि आपका फेस अच्छे से सेट हो जाए। आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन ब्रॉन्जर। नाउ गाइस फॉर ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी ब्लश इन द शेड रोज। नाउ गाइस आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस ब्राउ आर्टिस्ट। सो ये जीनियस किट है इन दी शेड 01। सो फर्स्ट इसमें आपको रिसीव होती है स्पूली। इसकी हेल्प से मैं अपनी ब्राउज को सेट कर रही हूँ। आफ्टर दैट इसके बैक साइड में आपको ब्रश मिल जाएगी। सो यहाँ पर इससे 2 शेड्स हैं तो मैं बोथ शेड्स यूज़ कर रही हूँ। नाउ गाइस उसके बाद मैं आई मेकअप के लिए यूज़ कर रही हूँ पोक्यो फेस का ये आई पैलेट इन दी शेड 01 ब्राइट लक्स। फॉर ट्रांजिशन शेड आई एम यूजिंग सैल्मन शेड और एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश यहाँ पे मैंने पिक की है। After that I am using pink shade. After that I am using wine shade.
नाउ गाइस नेक्स्ट मैं यूज करती हूँ पर्पल का लाइनर। नाउ गाइस नेक्स्ट मैं कर्ल करती हूँ लैशेस। फॉर मस्कारा मैं यूज कर रही हूँ ML ब्रांड का मस्कारा। नाउ नेक्स्ट I'm using Maybelline का Molten Gold highlighter. And last I'm using L'Oreal Paris lipstick in the shade 114 I represent. So guys यहाँ पर मैंने अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग ना डार्क शेड चूज़ की है बिकॉज मेरी ड्रेस लाइट शेड में है और उसके साथ ये डार्क पिंक शेड ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। And last I'm using Color Bar का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। तो गाइस दिस इज द फाइनल मेकअप लुक एंड आई रियली होप कि आपको मेरे ये मेकअप लुक पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। सो मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।